चैप्टर थर्ड क्लास 10th हिस्ट्री। हिस्ट्री का चैप्टर थर्ड टॉपिक है द राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। द राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड या और हम इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। चैप्टर थर्ड है क्लास 10th का, हिस्ट्री में है टॉपिक थर्ड चैप्टर राइज ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड या हम इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। टर्म ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं? हाँ, ग्लोबलाइजेशन इट इज़ ए प्रोसेस of integration. It is a process of integration of the different countries of the world. Countries of the world. Globalization چھُ سۄ process ییٚمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان؟ انٹیگریشن چھُ گژھان یا انٹر کنیکشن چھُ گژھان. انٹر کنیکٹ چھُ گژھان ڈفرنٹ کنٹریز دُنیہِچ آف ورلڈ. گلوبلائزیشن چھُ سۄ پروسیس ییٚمہِ سۭتۍ انٹیگریٹ چھُ گژھان انٹیگریشن چھُ گژھان مختلف کنٹریز آف د ورلڈ پانہٕ ؤنۍ چھِ یِمن انٹیگریشن گژھان تھروٗ اے پروسیس. تتھ پروسیس چھِ ونان گلوبلائزیشن. سمپلی گلوبلائزیشن چھِ سۄ پروسیس سۄ سسٹمیٹک ورک ییٚمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان؟ انٹیگریشن چھِ گژھان یا انٹر کنیکشن چھِ گژھان مختلف کنٹریزن آف د ورلڈ. مختلف کنٹریزن پانہٕ ؤنۍ گژھان آف د ورلڈ. انٹیگریشن چھِ گژھان تھروٗ د پروسیس آف د گلوبلائزیشن مختلف کنٹریزن آف د ورلڈ. ییٚلہِ یِمن انٹیگریشن چھِ گژھان تتھ پروسیسس چھِ أسۍ ونان گلوبلائزیشن. Now the thing is that how this integration among the different countries of the world happens. What are the causes of this globalization? What are the causes of this integration of the different countries of the world? Causes of this integration. We will now study the causes of the globalization या इंटीग्रेशन. जैसे कि हमने ऊपर देखा ग्लोबलाइजेशन गई इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. वो वुचो अस कॉजेज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन. अब हम देखेंगे कॉजेज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. इकोनॉमिक हिस्टोरियन जो हैं, इकोनॉमिक हिस्टोरियंस ने 4 कॉजेज दिए हैं. प्रोवाइड इकोनॉमिक हिस्टोरियंस जो हैं, हिस्टोरियंस प्रोवाइड 4 causes for the globalization. इकोनॉमिक हिस्टोरियंस के 4 causes देते हैं इस ग्लोबलाइजेशन की, जो हमने ऊपर देखा कि ये ग्लोबलाइजेशन इंटर कनेक्शन या इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड को कहते हैं. हाँ, अब इसके काजेज देखेंगे. इकोनॉमिक हिस्टोरियंस ने 4 काइंड्स ऑफ द काजेज दिए हैं. पहला काज है फ्लो ऑफ द ट्रेड. फ्लो ऑफ ट्रेड. Flow of the trade is the first cause responsible for the globalization, responsible for the integration of the different countries of the world. Flow of the trade मज क्या छु गसान? Flow of the trade मज छु गसान exchange of goods. Exchange of goods छु गसान flow of the trade मज. Exchange of goods छु गसान from one country to another country. From one country to another country. To another. Both has imports and exports. Both has imports and exports. Imports and exports. Both has imports and exports. چھِ گژھان
exchange of the goods چھُ گژھان flow inflow of the trade as imports and exports ییٚلہِ یہِ flow of the goods exchange of the goods چھُ پانہٕ ؤنۍ اَکہِ country پٮ۪ٹھ بیٚیِس country تام گژھان اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان یِم country چھِ پانہٕ ؤنۍ گژھان interconnect یِم countries چھِ پانہٕ ؤنۍ گژھان integrate on the basis of the trade یِمن دۄن countryَن درمیان یا واریاہن countryزن درمیان یِمن درمیان یہِ trade آسہِ گژھان تِم چھِ گژھان پانہٕ ؤنۍ integrate on the basis of the trade on the basis of the trade first second cause responsible for the globalization according to the economic historians چھُ flow of people دَپان ییٚلہِ flow لُکھ چھِ کران migration from one country to another country سُہ گوٚو flow of the people ییٚلہِ لُکھ چھِ کران flow from one country to another country اَمہِ سۭتۍ تہِ چھِ گژھان یِم countries پانہٕ ؤنۍ integrate لُکھ کیٛازِ چھِ کران لُکھ چھِ کران flow as laborers لُکھ چھِ کران flow as laborers as pilgrims لُکھ چھِ کران flow as preachers لُکھ چھِ کران flow as preachers لُکھ چھِ کران flow as travelers لُکھ چھِ کران flow as travelers laborers pilgrims preachers and travelers ییٚلہِ یِم flow چھِ کران اَمہِ یِہنٛدِ flow گژھنہٕ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان ییٚمہِ country پٮ۪ٹھ یِم flow کران یتھ country منٛز یِم flow کران سۄ یِم country چھِ پانہٕ ؤنۍ گژھان integrate ییٚمہِ country پٮ۪ٹھ یِم flow کران یتھ country منٛز یِم flow کران یِم country چھِ پانہٕ ؤنۍ گژھان integrate یِم چھِ کران flow as a laborers pilgrims preachers and travelers گوٚو لُکھ ییٚلہِ migration چھِ کران through their migration from one country to another country also leads to the integration of that country with the another country from where these people migrate to the country in which they migrated go flow of the people to be responsible for the globalization third factor जो economic historians ने दिया है वो है flow of the capital flow of the capital be responsible है for the establishment of the globalization capital होता है money capital go money ये money येली as a investment چھُ گژھان اَکہِ country پٮ۪ٹھ بیٚیِس country تام تہٕ ییٚلہِ یہِ invest چھُ گژھان اَکہِ country پٮ۪ٹھ بیٚیِس country منٛز تَمہِ سۭتۍ چھُ کران یہِ سۄ country چھِ گژھان یِم countries زٕ چھِ پانہٕ ؤنۍ گژھان ییٚمہِ پٮ۪ٹھ یہِ وَتھِ تہٕ بیٚیِس country منٛز invest گژھِ تَمہِ سۭتۍ چھِ گژھان یِم پانہٕ ؤنۍ integrate یہِ as a investment یہِ چھُ mostly چھِ کران developed countries چھِ کران invest into underdeveloped countries منٛز چھِ یِم invest پَنُن money کران ییٚلہِ یِم invest چھِ money کران developed countries چھِ کران underdeveloped countries منٛز پَنُن money invest اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان developed country تہٕ underdeveloped country چھِ پانہٕ ؤنۍ گژھان integrate on the basis of this relation of the flow of the capital flow of the capital سۭتۍ تہِ چھِ گژھان یِتھ کٔنٮ۪تھ ییٚلہِ یِم as a investment چھِ یِوان developed countries from developed countries into underdeveloped countries اَمہِ سۭتۍ تہِ چھِ گژھان اَمہِ سۭتۍ تہِ چھِ گژھان integrate یِم countries پانہٕ ؤنۍ fourth factor جو ہے وہ ہے flow of the technology یہِ چھِ responsible for the integration کِتھ کٔنٮ۪تھ یہِ چھُ کران reduce چھِ یہِ کران communication gap یہِ چھُ کران reduce communication gap plus distance تہِ چھِ کران یہِ reduce یہِ چھُ کران reduce communication plus distance چھِ یہِ کران reduce ییٚلہِ distance چھُ reduce گژھان naturally چھِ اکھ country بیٚیِس country سۭتۍ integrate گژھان ییٚلہِ اَکہِ country پٮ۪ٹھ بیٚیِس country تام distance reduce گژھِ سۄ country تہِ چھِ naturally integrate کران تتھ country سۭتۍ اوٚتَس تامَتھ چھِ یہِ technology چھِ communication technology چھِ distance barrier تہٕ communication barrier یہِ چھِ aside کران
barriers ये aside करान communication तो distance barriers ये aside करान communication gap छु reduce करान distance gap छु reduce करान यदि ये reduce छु गसान naturally छु अख country base country सित integrate गसान हाँ for example अगर इस निमो internet communication internet technology could change world into global village global village because the fastest means of the communication वुनकनस एम कर change the world into the global village है एम कर reduce total कर खत्म barrier of the communication total कर distance खत्म between the countries among the countries of the world तम की वजह से वुनकनस वर्ल्डस वन it has turned into the global village because of the internet technology similarly अगले ब्याक example निमो earlier आस न communication development तीसा कहीं sail ships आस earlier sail ships आस न तीसा effective in integration of the one country to another country तिकाज यम आस वारिया time दिवान to reach from one country to another country पतल steam engine आव steam ships ये आए steam ships कर further integrate ये communication ये integration among the world among the countries of the world को technology ती आख leading role करान integration establishment of the globalization of the world technology ती करान आख leading role आत मज अदा इत कनेथ आव समझ causes ते बे definition of the globalization या टॉपिकस मज पढ़ globalization क्या गो बे पढ़ causes of the globalization अगर causes पे नजर त्राओ अगर flow of the trade वुचो अगर flow of the trade वुचो अगर trade वुचो trade छु अख economic element अख ये economic element economic element यस integrate छु करान among the different countries of the world इथे कन अगर flow of the labor flow of the people मज वुचो flow of the labor छु ये छु अख economic element अख integration हुंद economic element छु ये integration हुंद इथे कन अगर capital वुचो ये छु economic in nature गो यस ये globalization establish गसान among the globalization यस establish गसान यमत reasons छु तिम छु majorly economic in nature अगर trade वुचो trade छु economic element अगर people लन मज वुचो labor छु economic element अगर flow of the capital वुचो ये छु economic element या युस क्या छु करान यम क्या छु करान integrate छु करान different countries of the world पानवइन गो मेजर causes economic historians दितमत globalization हिंद तिम छु majorly economic in nature तिम छु economic in nature आउ कि मूजूब छु वनान यम छु economic in nature आउ कि मूजूब छु वनान historians दपान यस हसा globalization हसा छु essentially economic system essentially economic system of world integration world integration तिकाज dominant factor is globalization मज cause युस छु dominant cause of the globalization युस छु सु छु economic elements यमन म यात मज trade छु यवान flow of the labor छु यवान बे capital छु यवान ह गो अमिक मतलब तावकिन छु historians वनान यस हसा globalization छु यस छु essentially economic system of the world integration अगर world integrate छु इशु integrate because of this economic system because of the trade because of the flow of the labor because of the capital investment because of the capital investment यम हसा छु major leading role karan play in the establishment of the globalization in the world इन leading go globalization छु majorly economic in nature globalization छु गो अमिक मतलब globalization छु majorly छु economic in nature ये छु majorly economic in nature मगर along with this अगर pilgrims निमो preachers निमो travelers निमो अगर नम त्रे निमो
अमि सत ग्लोबलाइजेशन एस्टैब्लिश मगर सो ग्लोबलाइजेशन कल्चरली इन नेचर हम करान इकोनॉमिकल इन नेचर नम करान कल्चर इन नेचर तिकाज पिलग्रिमेज सोशल पिलग्रिमेज यह सोशल सेटअपस सत रिलेटेड प्रीचिंग ति सोशल कल्चरस सत रिलेटेड ट्रैवल ति कल्चर सत रिलेटेड यम त्रे चीज करान वर्ल्डस इंटीग्रेट पान वन वर्ल्ड कंट्रीजन इंटीग्रेट पान वन मगर कित कनेथ कल्चरली इन नेचर नम करान इकोनॉमिकली इन नेचर नम करान कल्चरली इन नेचर गो इत कनेथ ग्लोबलाइजेशन गसान यमत काजेस तिम टू टाइप्स टाइप इकोनॉमिक इन नेचर सेकंड टाइप कल्चरल इन नेचर इकोनॉमिक इन नेचर डोमिनेट यम डोमिनेट कि इकोनॉमिक हिस्टोरियंस वनान समटाइम्स कि ग्लोबलाइजेशन यह एसेंशियली इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इंटीग्रेशन तो बे मगर सत कल्चरली इन नेचर मगर कल्चरल एस्पेक्ट तूत डोमिनेट इंटीग्रेशनस मज कहें मगर इकोनॉमिक एस्पेक्ट इकोनॉमिक काज मेजर डोमिनेट फैक्टर इन दिस ग्लोबलाइजेशनस मज ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन आपको समझ आई और इसके काजेज़ भी समझ आए। अब हम ये देखेंगे कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। यह चैप्टरस मज पढ़न यही ग्लोबलाइजेशन यह ग्लोबलाइजेशन पढ़न यह ग्लोबलाइजेशन पढ़न यह चैप्टरस मज अत लॉन्ग हिस्ट्री यह रीसेंट फिनोमिना कह अत लॉन्ग हिस्ट्री की मूजूब की वजह समित अम ग्लोबलाइजेशन स्टेजेस आमत कर डिवाइड ग्लोबलाइजेशन हिंद स्टेजेस आमत कर डिवाइड ग्लोबलाइजेशन लॉन्ग हिस्टोरिकल पीरियड यह आमत कर डिवाइड इंटू स्टेजेस डिवाइडेड इंटू स्टेजेस यह आमत डिवाइड इंटू स्टेजेसन मज आमत कर गो पढ़ो ये ग्लोबलाइजेशन पढ़न इन लॉन्ग टर्म मेजर यह लॉन्ग हिस्टोरिकल फिनोमिना इस डिवाइड कर्मुत डिवाइड इंटू द स्टेजेस गोडनुक स्टेज प्री मॉडर्न वर्ल्डस मज पढ़ो ग्लोबलाइजेशन किस अमुक यह वो यह किस कम आय प्री मॉडर्न वर्ल्डस मज दोयम स्टेज अमुक 1850 से लेकर 1940 तक मॉडर्न एरा मॉडर्न एराहस मज वो ग्लोबलाइजेशन कम आय और फिर तीसरा स्टेज जो है सो इंटरवार स्टेज इस पढ़ो फ्राम 1940 टू 1929 सह गो ग्रेट डिप्रेशनस तामत तो चूरिम स्टेज पोस्ट वार एरा सह गो ऑनवर्ड्स 1929 गो यथ चैप्टरस मज पढ़ो ग्लोबलाइजेशन कत मज इन कंटेक्स्ट ऑफ द प्री मॉडर्न वर्ल्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ 1850 एंड 1814 ड्यूरिंग यह गो मॉडर्न एरा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इंटरवार स्टेज है सो गो 1940 से लेकर 1929 अप टू द ग्रेट डिप्रेशन पत वो पोस्ट वार एरा ऑनवर्ड्स 1929 पत कम आय ग्लोबलाइजेशन यम 4 स्टेजेस ग्लोबलाइजेशनस मज पढ़न। नेक्स्ट वीडियो में हम पहले स्टेज से स्टार्ट करेंगे।